कि रिग्रेशन के बारे में जो मैंने कल बताया था, दैट वाज मोर और लेस क्लियर, थोड़ा सा दैट वाज मोर और लेस क्लियर, राइट? इफ थोड़ा सा आइडिया मिला होगा तो गिव मी अ थम्स अप। कल जो मैंने व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे regarding what this regression is in supervised learning, I expect कि more or less it was clear. Adi, Shashank, Yash, Harshita, Utkarsh, was it clear? Give me a thumbs up if it was. Harshita, Utkarsh, clear नहीं था? If it was not clear, Mohammed, give me a thumbs down. Fine, fine, fine. Running a bit back, 7 तक सब 7 ओके, कोई बात, ठीक है, ठीक है। सो मैं उस पार्ट पे भी आऊंगा, उस पार्ट पे भी I'll come, but ठीक है, let's discuss कि what are we going to discuss today. We'll formally define what linear regression is. We'll uh, dive a bit in mathematics थोड़ा सा आज, थोड़ा सा calculus, थोड़ा सा graph, थोड़ा सा maxima minima. Then we'll see what this cost function is and how do we minimize it and ये क्यों जरूरी है करना. Then we'll see what are the different performance metrics. So I expect कि should we start? Let me get over to my one notebook. Is it visible? So before we start with anything, let's first see what regression was. Let me give you a quick. Okay, Shrinjay दिख नहीं रहा है. clear नहीं है, just a second. Okay, is it? Perfect. So let me tell you what regression was. थोड़ा सा मैं summarize कर like Utkarsh as he has said. See, in what we do in regression, we have to predict some continuous values. Let's say we have a graph here. Okay. Let's say we have this graph. Let us say कि we have some values here, right? X and Y. X and some Y value. ठीक है? अब obviously when we are talking about this, there has to be some values, कुछ X के और Y के corresponding, like some values like this, something like this. We have this sample space in which we have our values like this. So these are what this X is simply that corresponding to this some point x1, x0, some x1, some x2, something like that. SSE point. So this point corresponds, this point corresponds to this y value, this point corresponds to this y value, this point corresponds to this y value, and so on, right? Like इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये y वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग ये y वैल्यू है, समथिंग लाइक दैट. So what we do in regression, we can say कि there is some kind of a function, there is some kind of a relationship. देखो बहुत ज्यादा ही है. Is it perfect? What I said कि first let us define what this x was. This x was your set of predictors, right? Like age, your weight. Like last हमने example जो देखा था जिसमें we have said कि let us say we have some age, let us say we have some weight. So based on some age, we'll predict the corresponding weights. So we can say here your independent variable was your age, right? And your dependent variable was your weight.
तुम अगर तुम्हारे मॉडल में है कि यू शुड बी आस्किंग वेट एंड यू वुड बी गेटिंग सम एज, तो तुम वो भी कर सकते हो. इट इज प्योरली अपॉन यू. आई एम सेइंग कि बेस्ड ऑन माई एज, व्हाट आई एम सेइंग इज बेस्ड ऑन माई एज आई वुड बी एबल टू गेट सम वेट. तुम इसका उल्टा भी कर सकते हो. Based on some weight you can also predict age. So for my hypothesis I'm saying कि ठीक है, we have some independent variable age and we would be predicting some weights. So I can say something like this, that there is some function in which whenever I put some age as my input, I would be getting some output as my weight. Right? Correct? Make sense? Shashank, Yash, Adi, Mohammed, Shreya, Harshit. Make sense? हाँ, अब ये हो सकता है, it could be like कि I don't know what this function is. Okay, that is purely understood. I don't know what this function is. ठीक है? But I know कि there is some kind of function in which whenever I'll put some input age, I'll get this weight. So let's do what? Let's just make it a bit elaborate. This time, let us say I have this age, I have this gender. Okay. Okay, this time let us say I have this age and gender, and corresponding to these both things, I want to predict what my weight should be. Let us say I have this age A1 and my gender is male, then I would be getting some W1. Let us say A2, this gender is female, and W2. So now what happened? Let us see what independent variables are here. See, independent variables are what? Age and your gender, right? These both are your independent variable. What are the dependent variables here? Dependent variables, your weight, right? Right? So can I say something like this, that whenever you put whenever you put a age and some kind of gender in your in this function, in this relationship, I would be able to get some weight, right? हो सकता है? Correct? Just tell me or not. In some hypothesis, let us say we are feeding this thing here, so we should be getting some output as weight, right? If I want to make it even more complex, I can play with age, your gender, where do you live, in which country do you live, किस time पे मैंने weight लिया, something like that. I can add n number of parameters in X, right? Right? I can have n number of parameters. What I said, let's say I can age, your gender, in which city do you live, in which country do you live, what is your income, or something. I can have some feature like that. And ultimately I want to get some weight. I want to get some weight. Okay. I want to get some weights. So we have some age as, let's say, A1, A2, A3, and I can go so on and so on. I can have this gender as G1, G2, G3, city as C1, C2, C3, and so on. C1 prime, C2 prime, C3 prime, so on. I can have my income as something as I1, I2, I3, and so on. I can have my weight as W1, W2, W3, and so on. So what I'm essentially saying is, just listen to what I'm saying. Based on all these many features, these are all your features. Age is your feature, gender is your feature, city is your feature, country is your feature, your income is a feature. Based on all these factors, I want to predict my weight. Okay? So if I want some parameters as X, what this X will have? X will have some age, X will have some gender, it will have some city, it will have some country,
would be having some income, right? Make sense? Make sense? थोड़ा थोड़ा. अब इसके कर if I use some hypothesis, I'll be able to get some. Just a second. Okay. So based on all these factors, I would be getting some weight, right? So let me formally use it. This term, there is xi and yi. What this mean? Your ith data point and x is your ith input vector. Like for example, this whole thing is a vector. This whole thing is a vector. This whole thing, for example, let's like when we say there is some a 0, 2, 3. So we can have something like this, like y, x, z. I can say there is this point which is here, which is here, like there is this point in space, right? Which is at the in x-axis it is at 0th place, in y-axis it is at this place, and it in z-axis it is somewhere around here. So we can say this is my final point. So this is a vector ultimately, right? In three, if I'm talking about 3 dimensions, कह सकते हैं ऐसा? This is a vector. This is obviously a vector. क्या कह सकते हैं? This is mathematically sound. This is a vector. So if we are talking about n dimensions, we can have some vectors like this 1, 2, 3, 4, 5. In 5 dimensions, we are having this thing. We can have 2 dimension, 1 dimension. That is purely upon us. But essentially, this is a vector. And what this I mean? Okay, so this is my first input vector. This is x1. The next one is x2, and this is your y2, something like that, right? So ऐसे एक इनपुट आउटपुट पेयर बनता है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला व्हाट दिस थिंग इज? थोड़ा थोड़ा. आई डोंट एक्सपेक्ट कि एकदम 100% आ रहा हो, बट मोर और लेस मैथमेटिक्स जो है वो वाला पोर्शन आई एज्यूम कि थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, परफेक्ट. सो ठीक है, व्हाट दिस रिग्रेशन प्रॉब्लम इज, आई गेस ये आइडिया मिल गया कि व्हेन वी ट्राई सम इनपुट in some function, we would be getting some y as output. As simple as that. So what I mean is, let us say we have this y over x, and I have this line here. I have this line here. Okay. So what I want is, whenever I give it some value x prime, based on this line, I would be able to get some y prime as my value. ठीक है, as simple as that. कि जब भी let's say ये कोई फंक्शन है y is equals to mx plus b. अब b तो नहीं है because it is crossing from 0, so let's say mx. This is the function. So whenever so if I know m, so whenever I put x, I would be getting some y value from this curve, right? From this curve, I would be getting some line. I would be getting some values which is corresponding to y prime. ठीक है, यही होगा. अगर हमको ये m पता है तो I can predict कि अच्छा give me x, I will predict what this y is. आ रहा है थोड़ा सा समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा है? Just give me a thumbs up अगर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. अरे it is very simple thing कि I know that function, and whenever I give some values in that function, मेरे को y का वैल्यू निकल आए. जैसे हम लोग करते थे बचपन में कि देयर इज दिस फंक्शन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2. अब x का डिफरेंट वैल्यू, आई कैन प्रेडिक्ट डिफरेंट y's. Perfect. So let us see what this linear regression is. Particularly, let us talk about linear regression. Let us talk about
Linear regression. So linear regression, I guess by the word it mean कि there is some, let's say वो age और weight वाले example, there is this age, ठीक है, and I'm getting output as my weight. So this function, whatever the function is there, it is linear. By linear, what I mean, it is linearly dependent on x. I guess linearity, I know I expect कि तुम लोग को आता होगा, degree 1 होना चाहिए उस function का with respect to that coefficient, sorry, with respect to that variable. Correct? Just give me a thumbs up or not. Correct? Mx, like y is equals to x square is not linear because the degree with respect to x is 2. What I want is the degree with respect to x should be 1. So there is some kind of linear like y is equals to fx, something like that. I don't think. Let us assume I don't know what this exact function is, but at most I know that whatever that function is, its degree is 1 with respect to x. Okay? So if I plot a graph, let us plot a graph. Okay, not here. We can have some data points like that. We can have some data points like this. ठीक है, मैं जानबूझ के क्रॉस यूज कर रहा हूँ बिकॉज वो डॉट से ज्यादा विजिबल रहेगा तुम लोग को. अब फॉर दिस entire thing there has to be some kind of line which, okay, let me make it of some other color. Can I have some other color for this? Let me see. Okay, अच्छा ठीक है. Yes. So we can say here कि there is some kind of linear line. ये एक linear line है. Am I correct? This is a linear line. This is a linear line, है ना? So I can say there is this line, some y is equals to fx. There's some this line on which whenever I put some x values, I would be able to get some y values. This is essentially what linear regression is. This is what linear regression. There is some line जिसके लिए कोई corresponding कुछ equation होगा, right? Just see this. There is this line, ठीक है? Let's say we have this equation y is equals to mx plus c, ठीक है? There is this equation y is equals to mx plus c. So if I know what this m and c are, I can predict for different x, right? अगर हमको m और c का वैल्यू पता लग जाए तो I can have this equation and I can predict y for whatever x I would be getting, right? हो सकता है ऐसा? हो सकता है? सिर्फ दो लोग ने बोला. मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, हमको नहीं पता. लेट्स से आई हैव दिस इक्वेशन fx is equals to 8x plus 3. So I know my m as 8. I know my b or c, whatever you want to say, it is 3. So this is my slope. This is my intercept. Basic class 12th mathematics. I assume कि इतना तो आ रहा होगा. मैं फिर भी अगर नहीं भी आ रहा होगा तो फिर भी I'll explain. No issues. Let us have these axes y, x. Let us have my graph as this. So let us take a line which is parallel to x axis. So whatever angle this is subtending, theta, this is your slope. ठीक है? This is your slope. And whatever this distance is, this is your intercept. So this is m. M is what? This is m is what? Essentially, m is what? This over this, because m is what? Tan theta, right? Basic mathematics. Basic mathematics.
M is your tan theta. And this intercept is whatever B, C, whatever you say, mx plus B, mx plus C, whatever you want to say. अब हो सकता है कि ये इंटरसेप्ट 0 हो तो ये लाइन ऐसे जाए, कुछ यहाँ से पास हो. अब थीटा m के साथ मैं छेड़छाड़ करूंगा तो मेरा स्लोप चेंज हो सकता है. बट एसेंशियली इफ आई नो m एंड इंटरसेप्ट आई कैन प्रिडिक्ट फॉर डिफरेंट x, राइट? हो सकता है ना ऐसा? यही होगा. So what I'm saying is, ठीक है, do what? Get me this line anyhow. If you get me this line, I can predict things. अब होता ये है कि when we are dealing with real world data set, हमारे डेटा लीनियर नहीं हो सकते. डेटा में लीनियरिटी नहीं हो सकता. हाँ, कुछ में हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता. डेटा कभी भी एकदम स्ट्रेट लाइन पे तुमको नहीं मिलेगा. रियल लाइफ डेटा ऐसे नहीं वर्क करता है. रियल लाइफ डेटा इज स्कैटर्ड. हम देखेंगे अभी स्कैटर प्लॉट्स हम देखेंगे, वो छितराए रहता है. बट आवर वर्क इज टू गेट दिस बेस्ट लाइन जिससे मेरे को एक्यूरेट रिजल्ट मिले. सो माय एम इज, द गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू गेट अ बेस्ट fit lines. How I can say? Okay, let me also explain this very clearly. Can I have some graph here? Okay, this is my graph. Perfect. So now see what do I mean? In this feature space, just tell me, can I have my data set as like this? Something like this, ऐसे scattered, right? It can scatter like this. So अब अगर मेरे को कोई लाइन बनाना होगा इसमें, जस्ट टेल मी, अगर मेरे को कुछ लाइन इसमें बनाना होगा, so I can make different lines based on intercept and slope. I can have a line like this. I can have a line like this. I can have a line like this. I can have a line like something like ऐसे ऐसे different lines I can expect, because whatever value of x and y is there I can predict. ठीक है, ऐसे ऐसे I can make different lines for different values of m and b. Okay, इतना समझ में आया कि in this feature space I can have multiple lines. अब how do I get the best line? Okay, let me make a very, okay, so let us say कि we have this line. अभी clear? Let us say we have this line. ठीक है, अब जरा एकदम ध्यान से देखना. अभी let me erase this point. अभी clear? So what I said कि if I take this as my x, if I take it as my y, if I have some x here, x, let's say 5 for example. So according to this x5, my value should be somewhere around here. ठीक है, my value should, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, इस पॉइंट को. According to my linear regression line, if something is like y is equals to mx plus c, let's keep it like that. So इसके हिसाब से मेरा y का वैल्यू कुछ यहाँ पे आना चाहिए, right? This should be my, let's say y5. ये वैल्यू आनी चाहिए थी. So this is my predicted value. This is my predicted value. I predicted कि ये वैल्यू आई, लेकिन आई क्या एक्चुअली? आई ये वाली पॉइंट, आई ये वाली पॉइंट, लेट्स से y5 हैक. So we can see there is this error. इतना एरर है मेरे पास. This is your error, right? इतना एरर आ गया मेरे पास. ये तो सिर्फ एक पॉइंट के लिए है. अब मैं अगर एक पॉइंट यहाँ लूं, ठीक है, एक पॉइंट अगर मैं यहाँ लूंगा, कुछ x7 लेट्स से, सो इसके हिसाब से मेरा पॉइंट को आना चाहिए था कुछ यहाँ पे, लेकिन आया ये पॉइंट यहाँ पे. तो देयर इज दिस एरर, राइट? देयर इज दिस एरर, राइट? इतना मेरा डिफरेंस आ गया. सी,
this was my predicted value. This is, sorry, wait just a second. This was my predicted value. इतना मैंने predict किया था कि इसके corresponding कुछ value मेरा यहाँ आएगा, लेकिन आया कितना, somewhere around यहाँ. This is my actual value, this is my predicted value. Correct? Makes sense? So we can say कि whenever we are dealing with linear regression in practical life, there will always be some kind of error. There will always be some kind of error. हम 100%, we cannot predict 100% with 100% accuracy. But it can be, we can predict till 99% accurate. I can predict till 96% accurate. Because ultimately, when we are dealing with feature space, you can see you will never have a point in a straight line. You would be getting point which is scattered. So my point is, I want to get a line जिससे ये error सबके लिए सबसे कम हो. The error corresponding to each x should be the least. हमारा aim यही होगा ultimately, right? Does it make sense? Just a second. Okay. Does it make sense कि ये जितना error आ रहा है, my aim is to minimize it. हाँ वंशिका. वंशिका, yes. सॉरी भैया गलती से ऑन हो गया. Oh, कोई बात नहीं. चलो. So are you getting what I'm saying? कि हमारा aim होगा ये जितना error आ रहा है, our aim would be to minimize this thing. जितना हमारा error आ रहा है, for every x, जितना भी हम x लेंगे यहाँ पे नीचे, our aim would be to reduce it. But हम उसको आगे डील देखेंगे. So let's see with some mathematics. अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ. What is happening here? We have our training data set. We're having our training data set. What we are doing is we are putting this in some kind of model which we'll make, and this model will give me some kind of hypothesis. So in this hypothesis, whenever I put some input, I'll be getting some kind of output. Okay? Is it correct? I explained this yesterday. We'll train this thing, we'll get some kind of model which will give me some hypothesis, and whenever I'll feed some input here, I'll be getting some output. Okay? So I expect this was clear. So let us say, again we have this graph x, something like y. Okay? And let us say, let m be the number of data. Just a second. Number of data points. इस पूरे डेटा सेट में कितने पॉइंट्स होंगे. ठीक है, लेट अस से. So if there is a line like this, and corresponding to this, let us say some x and y values are there. ठीक है. And this is your equation. So can you tell me what should be the equation of straight line? What should be the equation of straight line? Y is equals to mx plus c. Okay. What did you said? Y is equals to mx plus c. 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 So c is what? C is this intercept, right? M is what? Tan theta. यहाँ पे जो theta का बनेगा, ठीक है? Okay. So now can I write it like this? Since this y is a function of x, can I write it like this? Like let's say बस मैंने m और x को चेंज कर दिया. I said theta naught should be your slope and theta 1 is your slope. So this is your theta naught, and whenever you let's say this is, let us say this is
some phi. So tan of phi is your theta 1. मैंने बस वेरिएबल्स का नाम चेंज किया है, बिकॉज जो भी हम बुक्स में तुम लोग देखोगे यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक थीटा नॉट एंड थीटा 1, समथिंग लाइक दिस. आई कैन प्ले विद mx, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट जो बुक्स मैंने तुमको भेजा है रिसोर्सेज में इन योर रिसोर्स लिस्ट, यू विल गेट थीटा नॉट एंड थीटा 1. अब अच्छा ठीक, if you still have some confusion, let me tell you. This theta naught is what? This theta naught is your intercept. ठीक है, and this theta 1 is your slope. As simple as that. कुछ मैंने नहीं चेंज किया, बस आगे पीछे करके लिख दिया इसको, बस आगे पीछे करके लिख. So this thing which you have just seen, h naught of x is theta naught plus theta 1 x. So this h naught x is known as your hypothesis function. अल्टीमेटली हम इसी में x वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको y वैल्यू निकलेगी, राइट? मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा मेक सेंस, थोड़ा थोड़ा. दिस इज योर हाइपोथेसिस फंक्शन. इसी में हम अभी like we are using linear regression, so we can see this entire equation is linear with respect to x, right? Degree with respect to x is 1 इसका. So we can say this is your hypothesis function, right? Is it clear? Should I proceed? Is it clear? Should I proceed? Just tell me, give me a yes or no. Perfect. 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 Yes. Chalo. So now let's discuss what this cost function is. अगर तुमने मीन स्क्वायर एरर नहीं भी देखा है तो इट इज समथिंग लाइक दैट. Y x, I said there is some line. Let us say this line is some h, right? हमारा लाइन यही है, हमारा लाइन यही है. There are some values like this. हाँ, ऐसा भी इस पॉइंट पे भी कुछ लाइन लाई कर सकती है, ऐसा नहीं कि लाइन पे उस पे लाइन ही करे, हो सकता है. So let us say, okay, so let us say for some x, let us say this x, let us say it is as x3. For this x3, my h naught of x3 is this point, right? This is your predicted value, right? This thing, right? Basic mathematics मैं बस इतना बता रहा हूँ. अगर ये h naught है, h naught x is your this line. So if I put x3 here, I'll get some values which is your predicted value. But you see, the actual value is this thing. The actual value is this thing. So let me represent it some y. Let me say it to be a y. So there is this error. There is this error. ये error है कुछ यहाँ पे है? Just tell me. So if I try to have some square here, because हम जब भी देखते हैं तो distance, whenever we find some distance or whenever we are dealing with errors, we simply square it. Mean square error तुमने देखा होगा, root mean square error देखा होगा, right? It is a like accurate, to improve the accuracy and stop dealing with the negative values. There is one thing known as mean absolute error. You can also do with that, in which you simply take a mod and you take y minus h naught theta, वो भी चलेगा, h naught theta minus y, essentially both are same thing. But here we'll deal with mean square error. So you have a cost function which say, अच्छा, just tell me कि if I take a square here, if I want to find this distance
using distance formula, what should be the value if I'm talking about mean square error? So I can say my mean square error is something like that, कि h naught of x minus y, whatever value you are getting and you are squaring it. ये सिर्फ x3 के लिए है, ठीक है, इसको अगर y3 रख ले तो दिस इज ओनली फॉर x3, राइट? अगर हमको सबके लिए करना होगा तो लेट मी हैव इट फ्रॉम x1 y1, right? I have to add it till m points. So h naught of xm plus ym full square. यही करना होगा हमको सबका एरर अगर टोटल ऐड करना है, यही करना होगा. जस्ट टेल मी, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. आई एम सिंपली डूइंग व्हाट, हर एक x के लिए आई एम सिंपली कैलकुलेटिंग दिस एरर एंड एडिंग इट, राइट? So can I write it in this way that your cost function is essentially your summation I o starting from, sorry, I starting from 0 nahi, I starting from 1 till m points, whatever is your m points, your h naught of x minus y raised to the square. And one more thing, whenever we are doing with, these are your squared error, now you have to take mean. So you will do what, you'll simply divide it by total number of points, divided by total number of points, divided by total number of points. यही होगा means. I'm talking about mean. So these are your errors, these are your errors, these are your errors, and you divide it by total number of data points you have, so you'll get total errors, mean error, sorry. So let me divide this whole thing by m, ठीक है? Let us divide it by m. But देखा ये गया है कि if we have this coefficient 2 here, so whatever values we are getting in this term, this can easily reduce. अच्छे से वो reduce हो गया, हमें कुछ meaningful value आ जाता है. So generally convention is to divide it by 2m. So this is your cost function. एक मिनट, ये ऐसे कैसे हो गया? Just a second. So this is your cost function. अब एक चीज और ध्यान रखो, we have this h naught. H naught is a function of, if I say h naught x, this is somewhere a function of theta naught and theta 1, right? Is it? अगर मैं ऊपर दिखाऊं तुमको इस इक्वेशन में, so we need this thing and we need this thing. See here, right? Just tell me a yes or no. Just tell me a yes or no. So formally we define this cost function as something like this, as of, you see, we denote it with j, theta naught and theta 1, which essentially do what? 1 over 2m summation starting from 1 till m data point. No, we are not doing with m data point. We are now dealing with 2m data points. m अब हम सीधे m is, we are just taking its half. टोटल उतना ही है. अगर मैं 4 डेटा सेट के बात करूं और लेट्स से 16 डेटा सेट के बारे में बात करूं, तो आई कैन हैव समथिंग लाइक 2 into 8. सो माय m is 8 here, राइट? कैन आई से समथिंग लाइक दिस? अगर 16 डेटा सेट के बात कर रहे हैं तो वी कैन हैव इट इन अ मल्टीपल ऑफ 2 times 8. So we can say we are dealing with 2m data set here, and corresponding to every अब दिस आई इज जस्ट योर दिस. अब पहले पेयर के लिए तुमने सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे पेयर के लिए सब्ट्रैक्ट किया, तीसरे पेयर के लिए सब्ट्रैक्ट किया. डेटा पेयर जो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया, लाइक एकदम एकदम टॉप पे जाएंगे अगर, यस, सी दिस इज योर सेकंड, this is your first data pair, second data pair, something like this. So essentially this is your cost function. This is your cost function, as simple as that.
or this is sometimes also called a squared error formula. बट मोरलेस वाज इट क्लियर? इतना समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया है अभी तक, हमने सिंपल बस ये एरर निकाला, स्क्वायर किया, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्क्वायर एरर, हमने उसका मीन ले लिया, बस, और कुछ नहीं। इतना क्लियर हुआ? शुड बी प्रोसीड? या कोई क्वेरी है तो रेज योर हैंड। डू वी हैव एनी क्वेरी टिल नाउ? ओके, सो लेट मी प्रोसीड आगे। अब नाउ दिस इज द कॉस्ट फंक्शन। अभी मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया था कि आवर एम इन लीनियर रिग्रेशन इज टू गेट द बेस्ट लाइन, वॉट एवर एरर वी आर गेटिंग, हमको इसको मिनिमाइज करना होगा। ये जितना कम एरर आए उतने अच्छा बात है। जितना कम एरर आएगा, मेरा ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू के उतना नजदीक होते जाएगा, राइट? जितना एरर ये कम होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होगा, राइट? इफ यू हैव सम लाइन लाइक दिस जिसमें x का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तब नाउ द एरर इज अ बिट लेस. So in linear regression, our aim is to minimize this thing. Our aim is to minimize j of theta naught comma theta 1. हाँ वंशिका, भैया इसमें जो आपने फॉर्मूला लिखा है सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 टू सिग्मा सॉरी इज इक्वल्स टू 2m, वहां पे सिर्फ m होना चाहिए ना? मैंने क्या बोल दिया? देखो, तुम m से भी बना सकती हो. You can do it with m also. What I'm saying is whenever we will try, अभी हम आगे भी देखेंगे, हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, when we are dealing with, जब हम आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे and we'll do different things, तो ये 2m वाला फैक्टर मेरे लिए बहुत अच्छा से यूज हो जाता है. अब जैसे if I'm dealing with 16 data set, I can write it in a form of 2 into 8, right? I can write it like that. Perfect. I can write it like that. Now let's see. Our aim is to minimize this j theta naught and theta 1. हम इसको मिनिमाइज करेंगे. ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब let us see for some cases. Let us have something like h naught of x as something as theta naught plus theta 1 x. ठीक है, let us have for this equation, if theta naught is equals to 0, if your slope is 0, let's see what happens. So if your slope is 0, sorry, your intercept is 0, the line should pass from origin, right? Basic mathematics. अगर intercept 0 है, line should pass from this thing. Okay, now let us do what? I want you all to calculate me. Okay, question goes, calculate j theta naught comma theta 1 for a, let us say 1 comma 1, b 2 comma 2, c 3 comma 3. Okay. Now take theta naught as 0. Take theta naught as 0. Okay. Take theta naught as 0. So what I am saying is I have to calculate this thing. Okay, I'll do it. No issues. I'll do it. Fine. So let us solve this. So j theta 1. Now theta naught is 0. Let's talk about theta 1. Can I say it 1 over 2m? Let us do like this. And let's have the summation. Okay, we can have the summation. I can do something as of key. If you see, according to this point, my equation goes as y is equals to x. Make sense? Or you can say your hypothesis function is simply x. So if I put x minus 1, okay, let us have something. H naught of 2 minus 2 whole square plus h naught, and we put x3 minus actual
So if you solve this whole thing, you'll get a 0. You'll get a 0. You can check. H naught of 1 is simply 1. If you put it in this equation, y is equals to x. If you will put in this equation, you'll get. So you get your cost function as 0. Now if you try it for theta is equals to 0.5 theta naught. So you will get somewhere around your cost function is, sorry, theta 1. Let us take your slope as 0.5. So you will have some cost function is as, you can solve it by your own, but I'll not solving it here. You can have somewhere around 0.57 to 58. इसी 57 से 58 के बीच में लाई करेगा. लेट अस से 5. ठीक है. So ऐसे different थीटा नॉट यानी कि डिफरेंट स्लोप के लिए वैल्यू के लिए द कॉस्ट फंक्शन इज वेरिंग, राइट. फॉर डिफरेंट slope, for different values of slope, the value of your cost function is actually changing. अभी देखा तुमने, यहाँ तो 0 आया, यहाँ 0.58 आया, हो सकता है कोई वैल्यू इससे भी अच्छा हो. चलो यहाँ पे तो आइडियल केस आ गया 0, तब तो बात ही खत्म है. बट देयर इज सम वैल्यू जिसके लिए you'll get a value बहुत higher above, बहुत बड़ी वैल्यू भी मिलेगी और बहुत छोटी वैल्यू भी मिलेगी. So in general it is seen if we will plot this cost function theta naught comma, अच्छा ठीक है पहले मेरे को एक डायमेंशन में करना दो, मैं 2 डायमेंशन भी तुमको बताऊंगा क्या होता है. theta 1 with respect to theta 1, you will have a curve like this, a parabola. अब इस पैराबोला में कैन यू टेल मी कि दिस पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट, राइट. यहां पे कुछ होगा थीटा लेट्स से मिनिमम कुछ पॉइंट होगा यहां पे जिसके करस्पॉन्डिंग वी कैन से द जे थीटा इज ऑलमोस्ट 0, राइट. द जे थीटा इज ऑलमोस्ट 0. सो वी कैन से when theta 1 will tend to this theta minimum, my j theta 1 will tend to j of theta m, which is somewhere around 0. Can I say जब भी एक मिनट, just a second, what Arya is saying she is not able to join. Okay, so ये पॉइंट क्लियर हुआ. जस्ट गिव मी अ थम्स अप और नॉट. मैंने क्या बोला कि अच्छा अभी तो मैंने सिर्फ 2j के लिए वैल्यू निकाली, अभी तो ऐसे सॉरी 2 थीटा 1 के लिए वैल्यू निकाली. ऐसे तो बहुत सारा थीटा 1 हो सकता है जो हम लोग चूज करें अपने लिए, और उसके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज आएगी, राइट. जस्ट गिव मी अ थम्स अप और नॉट. आएगी ऑब्वियसली. नंदिनी, यश, श्रेया, मोहम्मद. व्हाट आई एम सेइंग कि देयर वुड बी डिफरेंट theta 1s for which I would be getting some cost function. So in general, if you plot this thing, you would be getting something as a parabolic graph. कुछ parabolic graph आएगा. अब एकदम perfect parabola हो सकता है, थोड़ा shifted हो सकता है, but more or less since this is a squared function, this is of power 2, we would be getting some quadratic curve जैसे होता है हमारा quadratic curve. ठीक है. हाँ, अब हमको ये थीटा what our aim is to get this theta min, because when we will get this theta min, what we'll see कि our cost function is minimized. समझ नहीं आ रहा है. okay, just see what I'm saying. Okay, let me explain. मैंने अभी तुमको यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया कि we have this data points, ठीक है, we have this data points and let us say कि its slope is 0. Let us say the slope of this equation is 0. अभी के लिए for the instance मैंने j cost function calculate किया, तो I got my cost function as 0 for theta 1. ठीक है, अभी के लिए. अब जब next time में when I put my theta 1 as something like 0.5,
पहले मैंने 1 रखा, if I for this equation my theta 1 is 1, right? My theta 1 is 1. So when I put that thing, I got my cost function as 0, which is the least I can get. जब मैंने 0.5 रखा तो आई एम हैविंग समथिंग एज 0.58. अभी तो मैंने बस इतना रखा, बट व्हेन यू विल प्लॉट इट अलग अलग वैल्यूज के लिए, you will see some kind of parabolic curve. You'll get some kind of parabolic curve. अब इस parabolic curve में if you see, if I want to minimize my error, I have to select this point. इस पॉइंट के अबाउट मेरा थीटा जो कॉस्ट फंक्शन है ये ऑलमोस्ट मिनिमम है, 0 के रेंज में है, राइट? आर्या, इतना समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ, ये सिर्फ एक्स के लिए हो गया. लेट अस से फॉर दिस इज नॉट द आइडियल केस, लेट अस से कि इफ आई हैव three axes in which I have my j theta naught, theta 1. So this is my theta naught, this is my theta 1. So I can have a funnel like this. There is this kind of funnel. जैसे फनल देखा ना तुम लोग, पैराबोला टाइप का होता है 3D में, और यू कैन कॉल इट पैरेललोबोलॉइड if you will see. So there is this thing. Our aim is to get to this point. Our aim is to get to this values of theta naught and theta 1. हमारा aim है to get this value of, let's say, theta naught 2 for example, theta 1 2. These are not square, मैं बस वो point है. इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आई कैन सी माई कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, राइट? ये दोनों मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया तो मेरे को मिनिमम वैल्यू आ गया कॉस्ट फंक्शन का. आया मेरे को? जस्ट टेल मी यस या नो. जस्ट अ सेकेंड, मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअल में ग्राफ होता कैसा है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Gradient, you can also just see in your screen. Just tell me if it is visible or not. You see, इस तरह का कर्व होता है कुछ for different values. See, this is your this is cost function, this is your theta, you can take it as slope, this can be your intercept. So this is something like this. हमारा एम होता है कि we have to reach to this point, सबसे जो मिनिमम पे है, राइट? यू कैन हैव समथिंग लाइक, ठीक है, ये देखो, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड योर सॉरी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट, एक कुछ मिनिमम पॉइंट आएगा, राइट? दिस इज व्हाट आई मीन. You can also check it using this thing, gradient descent GIF. इसका एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हमारा gradient descent का, इसलिए मैं उस पोर्शन पे नहीं आ रहा हूं अभी. So more or less we have something like this. इस तरह से कर्व आएगा. So our aim is to reach at the bottom. उस बॉटम पे what we'll see, okay, let's see here. ठीक है, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट मोर और लेस यू वुड बी गेटिंग व्हाट आई मीन कि आवर एम इज टू रीच टू दिस मिनिमम पॉइंट, राइट? इस मिनिमम पे इफ यू वुड बी देयर, हमें हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा, राइट? मेक सेंस? थोड़ा थोड़ा. आर्या, वंशिका, नंदिनी, आदि, श्रेया, मोहम्मद, ठीक है. अभी के लिए बस इतना जानते हैं, अभी के लिए हम बस इतना ही जानते हैं इसमें. बिकॉज अगर मैं अब इफ यू आस्क मी कि हम यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे, तो दिस कम्स अगर योर अंडर योर ग्रेडियंट डिसेंट, वो हमारा कंप्लीट मॉड्यूल है, इसलिए मैं उस पर नहीं आना चाहता हूँ. बट मोरलेस एक आइडिया मिला कि देयर हैज टू बी सम वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट एंड एक्स सॉरी थीटा नॉट एंड थीटा 1 फॉर विच माई कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमाइज. इधर से कुछ वैल्यू होगा, लेट्स से 2, इधर से कुछ वैल्यू होगा, लेट्स से 2. इस पॉइंट के लिए माई कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमाइज. दैट इज माई एम. ठीक है. अब ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा नहीं, अभी के लिए बस इतना जाना. सो मोर और लेस आवर एम वाज to reach at the
if you would recall your class 12th, there is this term which is known as global minima of the curve. Curve किसका? Cost function versus theta naught comma theta 1. Our aim is to reach to this global minima. अब because see, होता ये है कि if we plot it, there is something like this. वो पूरा फंक्शन एकदम प्रॉपर वैसे नहीं होता, बट कुछ उसमें, अब if I would ask you, this is your local minima, this is your local minima, but our ultimate goal is to reach to this point which is your global minima. इस पूरे ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट हमको जानना है. इसी वैल्यू के लिए ही तो तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज होगा. इसी वैल्यू के लिए तो तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हुआ है. यहाँ पे मेरा ग्राफ अच्छे से नहीं बनाया, बट आई अज्यूम कि तुम समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. यहाँ पे तो कॉस्ट फंक्शन मेरा चलो इस लोकल पॉइंट के लिए आ गया इतना, बट इससे कम भी तो वैल्यू है यहाँ पे. आवर एम इज टू गो टू दिस वैल्यू. सो आई अज्यूम कि इतना क्लियर हो गया तुम लोग को. हुआ? जस्ट गिव मी अ यस और नो. जस्ट गिव मी अ यस और नो. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. थोड़ा सा मैथमेटिकल आई हैव केप्ट इट, बट आई अज्यूम कि यू वुड अप्रिशिएट कि व्हाई आई एम डूइंग दिस मैथमेटिक्स, बिकॉज हम लोग जब लाइब्रेरीज यूज करते हैं ना, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है, हम बस एक चीज लिख के दे दिया कि लीनियर रिग्रेशन इन दिस, यूज इट इन दिस वेरिएबल, वो करके दे देगा, बट हुआ कैसे. एनीवेज, लेट अस डिस्कस दिस अनदर टॉपिक आज का, कि ठीक है, वी गॉट दिस लीनियर लाइन, वी गॉट द बेस्ट लाइन एंड वी आर गेटिंग सम वेरिएबल्स. हाउ डू वी एक्चुअली मेजर कि ये वैल्यू कितनी अच्छी है. Our aim is, let's see, let's performance metrics. मैं ऐसे क्यों लिखा रहा है यार मेरे से, इसके लिए. Okay. In this there are, हम लोग बहुत तरीके से करते हैं, like there is mean absolute error, there is mean squared error, there is root mean squared error. ये सब तो I guess तुम लोग पढ़े होगे. If I'm talking about, let's say, mean absolute error, so what this thing is, as simple as that. Let's say we have a line like this, so corresponding to this x, my actual value is this, right? This is my predicted value, but let us say my actual value is this. My actual value is this. So whatever is the horizontal distance, or I can say whatever is this yp minus ya, this is my मीन एब्सोल्यूट एरर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मीन, तो मेरे को इसको समेशन करना होगा जितने भी वैल्यूज हैं i is equals to 1 से लेके m के लिए, एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीन वी हैव टू डिवाइड बाय m, राइट. हम ये सिंपल मैंने ये क्यों लिया है मॉड साइन, बिकॉज हो सकता है ये पॉजिटिव हो, कहीं के लिए नेगेटिव हो, तो मोर लेस तुम्हारा वो कट के छोटा छोटा होता जाएगा. हाँ, आदि इसको उल्टा भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हम मॉड साइन लगा रहे हैं. ठीक है, एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड माइनस एक्चुअल. देखो वो अब जैसे अब तुम्हें याद नहीं रहा तो तुम अब कंफ्यूज होने जाओ कि मैं आगे रखूं या पहले रखूं. उसको नहीं रख सकता, हो सकता है याद नहीं हो हमको, लेकिन बट ठीक है, ये मॉडुलस साइन है. इवन इफ आई एम गेटिंग -5, if I'll take a mod, I'll get the answer 5, no issues. ठीक है. So this is a mean absolute error. You have the second thing which is known as mean squared error, something as 1 over m, 1 till m, and now you have to take yp minus y actual whole squared. This is your mean actual error, mean squared error, sorry. We are taking a mean of whatever the error we are getting, उसका स्क्वायर किया और सीधे मीन लगा दिए. सम you have this root mean square error, root mean square, whatever you get mean squared error, you simply take a square root of that. ठीक है. मेरा जो पर्सपेक्टिव है आज डिस्कस करने का, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, which is known as, पहला इसमें होता है there is something known as r square, these are known as scores.
R square. Let me tell you here. We define R square as 1 minus squared sum of residual over squared sum of total. That is 1 minus summation of yi, that is your, these are your actual values, and y hat of I, this is your predicted value. Y hat is what? Your hypothesis function. Or you can write h naught there, no issues. This is what? This is your h naught. Y hat, I'm just saying. And we divided by, oh, I divided by summation of yi minus y bar squared. Y bar is what? Y bar is your mean. जितना भी तुम्हारा predicted value आया सबका you take the mean. अब now see what happens. What I said, your R square is 1 minus summation of yi minus yi hat, ऊपर नीचे लिखो कोई इश्यूज नहीं है, summation of yi minus y bar. अब technically just tell me if we are dealing with mean, so this value is a high value. This value is a high value and this value is a bit low value correspondingly. मतलब इसके respect में वो थोड़ा छोटा होगा because see what happens, this R square lies between 0 and 1. This lies in this range. अब 0 से 1 के रेंज में होने के लिए this has to be a low value, this has to be a high value. ठीक है? Correct? Perfect. अब होता ये है कि let us say for some case I have something as I have वही जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था age वाला. Let us say if I have something as age, if I predict it for some weight, let us say my R square is somewhere around 65%. If I take age and if I add next feature, हो सकता है कुछ important feature like gender, and if I get this weight, I can have R square as let's say 70%. Obviously हो सकता है एक 70 के एज का एक अगर मेल है तो generally, I'm using this word, generally it would weight more than उसी एज की एक फीमेल. जनरल ओपिनियन, इज इट? अगर एक 10 साल का लड़का है तो जनरली ही वुड बी वेइंग मोर देन अ 10 साल की लड़की, राइट? हो सकता है गलत भी हो सकता है, बट जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट. हो सकता है ना? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री. सो अगर मैं कुछ और ऐसा फीचर ऐड करूं, लेट्स से एज एंड लेट अस से जेंडर and let us say city, and if I still get weight. अब ऐसा भी हो सकता है कोई एक शहर का एक एवरेज वेट ज्यादा हो तो हो सकता है कि अधिकतर उस शहर से कोई लड़का या लड़की हो तो उसका जनरली वेट ज्यादा ही होगा. So if I get R square somewhere around 85%, so हाँ सिटी या फिर जिस स्टेट से आ रहा है उससे भी डिपेंड करता है, राइट? कि उसका वेट ऑलमोस्ट लाइक मोर एक आइडिया मिल रहा होगा व्हाट आई मीन टू से. पूरे इंडिया में इफ यू टेक समवन फ्रॉम पंजाब तो उसका वेट वहां का एक एवरेज कोई बंदा उठा तो उसका वेट डिफर करेगा कोई दूसरे स्टेट के बंदे से, राइट? इफ यू टेक समवन फ्रॉम साउथ, इफ यू टेक समवन फ्रॉम नॉर्थ, इफ यू टेक समवन मतलब कहीं भी द वेट वुड डिफर थोड़ा मोड़ा. द वेट वुड vary to some extent. So I can say still this city is also a factor which is able to predict weight. But let us say I have this age, I have this gender, I have this city, and if I take something as his favorite cricketer, if I use it to predict my weight,
I can get my R square as let's say 90%. But can you tell me ये प्रिडिक्टर के कारण वेट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? इट इज नॉट कोरिलेटेड, राइट? इज इट कोरिलेटेड? जस्ट टेल मी। उसके फेवरेट क्रिकेटर से उसके वेट का क्या सेंस बनता है? हाँ, सिटी का हो सकता है, कंट्री का हो सकता है, जेंडर का हो सकता है, एज का हो सकता है, बट इट डज नॉट मेक एट एनी सेंस कि हिज वेट इज समहाउ रिलेटेड टू दिस फैक्ट दैट एक पर्टिकुलर पर्सन का फेवरेट क्रिकेटर होगा, right? It does not make any sense, but still I am getting my R square as 90%, right? So we can say there is some kind of discrepancies with R square, हमेशा सही नहीं होता है, but general case में we assume कि if all the attributes are somehow correlated to each other, तो हाँ, we can use R square. So in order to deal with it, there is one more performance metric which is known as R square adjusted. अब हो सकता है तुम लोग के कोई बुक पढ़ो या कोई कहीं वेबसाइट पे देखो तो कुछ फॉर्मूला में कन्वेंशन चेंज हो सकता है, बट एसेंशियली द फॉर्मूला विल रिमेन सेम. व्हाट दिस फॉर्मूला सेज नाउ कि r स्क्वायर एडजस्टेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस r स्क्वायर n minus 1 over something as n minus p minus 1. What this r square is? This r square is same as this thing. ये r square वही है. First we will calculate this and what this n and p are. See, what this n is, it is total number of samples कि डेटा सेट में कितने सैंपल्स है, कितने डेटा पे मैं वर्क कर रहा हूं. एंड व्हाट दिस पी आर, total number of predictors, or you can say features, or you can say dimensions of x, dimensions of x vector. x जो मेरा हमारा वेक्टर था उसमें अलग अलग फीचर, लाइक फॉर एग्जांपल इस केस के लिए मैं दूं, so for this example we have two predictors, we have three predictors, we have four predictors, we have one predictor, and if I'm talking about in a data set of let's say 10 people, so my n is 10 and my predictor is whatever I want. I guess इतना पार्ट क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा. So essentially what we are doing, let's see, what I'm saying is, if I have a data something like this, y x, if this is a line, okay, if this is your line, right? So can I say कि my mean value is something like this, कुछ mean value होगा मेरा, वो ऐसे होगा y bar, this is your mean value, कुछ भी हो सकता है, but obviously mean value पूरे data set के लिए same रहेगा, तो it would be a constant line. So our aim is, see what I'm doing is, let's say this is my point, let us say this is my point, let us say this is my point, let us say this is my point. What I'm essentially doing is, I'm simply calculating this distance, how it deviates from the mean. The worst case is, it would be equal to mean. So if that is the case, if this is equal to mean, this will be 0 essentially, this will be 0 essentially, right? यहाँ मीन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर दोनों ये इक्वल हो गया तब तो ये फैक्टर 0 हो गया. अगर वो 0 हो गया तो जस्ट अ सेकेंड, अगर ये 0 हो गया, ये वाला फैक्टर, तो इफ आई टेक इट subtraction from 1, तो ये somehow infinity की तरफ जाएगा, it will somehow tend to infinity, right? Give me a thumbs up, yes or no, if you are getting what I'm saying. If that thing would go till infinity, somehow this entire thing is somehow mathematically incorrect. कुछ एरर आ जाएगा, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगा मेरे पास, राइट? दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. हम नहीं चाहते हैं कि हमारा हर एक वैल्यू मीन के इक्वल हो. हाँ, कुछ हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड,
but I don't want all of my values should be equal to my mean. अरे हम नहीं चाह मीन के इक्वल हर थोड़ी हो सकता है सब वैल्यूज, वेट तो वैरी करेगा ना. आई डोंट वांट दैट मीन. व्हाट आई वांट, there's some there should be some distance between mean value and your actual predicted value, right? So more or less I assume कि इतना पार्ट क्लियर हो गया सबका. मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि in order for a linear equation to work, for work we need some m, we need some b. So whenever we'll do this, we'll get my y for different x, right? So should we actually go on and implement this thing? Should we do it? Give me a thumbs up if you're ready with your Google Colab or something like that. Perfect. So I assume कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझ में आया होगा, एंड आई एक्सपेक्ट कि यू वुड हैव अंडरस्टूड कि मैंने क्यों तुम लोग को बोला था कि गेट अ नोटबुक विथ यू आज. इफ यू अगर पहली बार में नहीं समझ में आया होगा, यू आर फ्री टू रीड इट अगेन, नो इश्यूज. गो ऑन दिस लेक्चर बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि फर्स्ट टाइम में यू विल गेट एवरीथिंग. ठीक है, लेट मी हैव अ न्यू नोटबुक. लेट मी ओपन दिस थिंग फर्स्ट. टिल देन किसी को कोई क्वेरी है अभी तक, जब तक ये लोड हो रहा है? जस्ट टेल मी, कोई क्वेरी किसी को? इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी गिव मी अ थम्स अप, मैं समझ जाऊंगा. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ लीनियर रिग्रेशन. वी starting with linear regression. So I want you all to open this documentation now. Perfect. sklearn, it is a very famous library for implementing machine learning models. ठीक है, we'll learn by this and I'll actually help you out. अगर किसी ने Google Colab open किया हुआ है, तो I want you all to go to this section in which we'll upload our data set. Just give it a second जब तक ये connect होता है. ठीक है, till then I want, हाँ ठीक है, now it is open. Go to this option, get your placement.csv जो मैंने ग्रुप में भेजा था, and put it here. ठीक है, so let's start with linear regression. इस पॉइंट के लिए आई गेस सब कोई रेडी था. ओके, लेट्स स्टार्ट. आज सबसे पहले व्हाट वी वांट कि लेट अस इंपोर्ट लोड सम लाइब्रेरीज. लेट अस लोड सम लाइब्रेरीज, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज. सो एज यूजुअल import numpy as np, import your pandas as pd, import your matplotlib.pyplot as plt. चलो, so this is your library. You have loaded your library. ठीक है, let us go on to some next section. अब now what I want my system to read whatever my data set is, right? Make sense? थोड़ा थोड़ा. I want my data set to be read. So as I said, there is this function df is equals to pd dot read underscore csv, and in csv what you have to feed, actually you have to feed the address. See, copy path, we'll put it here. So I want to load my data set. I want to do what? I want to load my data set. हो गया सबका? आया सबका? आया तो जस्ट गिव मी अ यस इन चैट. मैं कैसे समझूंगा कि तुम्हारा आया है या नहीं? So yes, let us see कि हमारा डेटा सेट लोड हुआ है या नहीं. I'll use this head and I'll see कि हाँ मेरे पास कुछ डेटा आ गया जिसमें CGP और package is my attributes and we have some values. अब तुम लोग को शायद समझ में आ रहा होगा कि why would I have said कि let's understand this data frames and all. तो हाँ, data frame में we see we have some values here, right? आया सबका? आया सबका? Just give me a yes.
Just give me a second. Yes, I'm getting this thing. So इतना part I guess clear हुआ. ठीक है? Let me. So let us plot पहले हम plot करते हैं कि let's see कि data का path distribution कैसे है. ठीक है? plt.scatter, very famous way. ठीक है? And what do I want in this thing? I want कि in x axis let us say CGP and in y axis let us say this package. तुम इसका उल्टा file not found error आदि just do it अच्छे से एक बार properly हो जाएगा. In case नहीं होगा तो you can use Jupyter notebook. मैंने एनाकोंडा का भेज रखा है, तुम Jupyter notebook से भी कर सकते हो. File not found कैसे नहीं आएगा? तुमको कॉपी पाथ करना है विद इन दिस कोटेशन मार्क, यू हैव टू से पुट दैट कोटेशन मार्क के अंदर ही पुट करना है. ओके, लेट्स सी हाउ आई वांट माय स्कैटर प्लॉट. सो आई वांट दैट माय CGPA शुड बी इन माय x एक्सिस एंड माय ये क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, पैकेज शुड बी इन माय y एक्सिस. ठीक है, लेट्स लेबल दिस थिंग. सो plt.x label. So in plt.x label, let us say कि I want my CGPA. In plt.y label, let us say कि I want something as my package, and this package is more or less it should be in LPA, something like this. ठीक है? Oh. देखे ये डेटा कुछ इस तरह से आया सबका. वंशिका, यश, मोहम्मद, आर्या, नंदिनी, आदि, शशांक. I'll give you this notebook. I'll send you this notebook. Okay, ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? Just a second. By mistake. Okay. I want in my x-axis, I want my CGPA, and in y-axis, I want my package. Right? Let's label this thing. Let us label this thing x label. In x label, I want to say this is my CGPA. In my y label, plt.y label, I can have something as my package, and I want my package in lakhs per annum, right? If I plot this thing, you'll see you have a data. और जब हम रियल लाइफ डेटा में डील करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है. यू सी ये पूरा ऐसे छितराया हुआ है, बट मोर लेस यू कैन सी एक विड्थ में ये वैरी कर रहा है, राइट? मोर लेस कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह है. अब देयर कुड बी वेरियस स्ट्रेट लाइन जो इससे पास हो सकता है, तो वील सी कैसे हम इसको डील करेंगे. बट टिल देन आई गेस इतना सबको दिख गया कि वी हैव and we have an independent variable. Slide up for a while, Adi. Look here, let me copy paste this thing for you. अच्छा कोई इतना तो ये कर लोगे, ये वाला पार्ट में कर दे रहा था. Okay. So now we have seen कि हमारा डेटा कैसे वैरी कर रहा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड पहले बिफोर एक्चुअली गोइंग ऑन टू इम्प्लीमेंट योर मॉडल कि लेट अस सी कि हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. तब हम एक्चुअली हम सोच पाएंगे कि हम किस मॉडल के साथ वर्क करें. इमेजिन कि तुमको मैं लीनियर अभी रिग्रेशन नहीं पढ़ाया हूँ एंड ना तुमको सब आता है, तो कैन यू सी जस्ट बाय इंट्यूशन that okay, my data is somehow it is going linearly. Otherwise your data could go something like ऐसे जैसे quadratic curve होता है, it could go in that direction, right? Cubic की तरह हो सकता था, right? Just give me a yes or no. Give me a yes or no. Perfect. So it is before actually going on and implementing कि हमको क्या implement करना, it is very crucial to understand कि भाई मेरा data distribute कैसे हो रहा है. So इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ, this package is somehow related to this CGPA. I can assume. ठीक है,
अब in order to train your model, it is very important to actually choose कि किस पैरामीटर्स, अभी तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो पैरामीटर्स यूज किए हैं, CGP एंड पैकेज, बट आई कैन हैव इट मल्टीपल, लाइक ग्रेड्स हो सकता था उसका, उसके ग्रेड्स पे भी उसका पैकेज डिपेंड करता है, राइट? उसका स्पीकिंग स्किल कितना अच्छा है, इफ आई हैव टू ग्रेड इट इन 1 to 10, इट कुड आल्सो डिपेंड ऑन दैट. उसका पर्सनालिटी कैसा है, इट कुड आल्सो डिपेंड ऑन दैट. बट आई एम फॉर टुडेज ओनली आई एम टेकिंग दिस. What is DF here? DF is your a variable in which your CSV file is loaded. See, it is a data frame. हाँ वंशिका, थोड़ा सा लेट्स भैया बी. इसमें जब हाँ बोलो बोलो बोलो. एक सेकंड, मुझे मेरी गलती दिख गई, रहने दीजिए भैया. अभी तक मैं कोई गलती नहीं किया हूँ. होगा तो आई विल अप्रिशिएट कि तुम लोग फिगर आउट करो. ठीक है, नाउ लेट्स अस से कि हम किस किस पैरामीटर पे हम ट्रेन करना चाहते हैं. तो कैन आई से माय एक्स, दिस एक्स दैट इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट हैज टू बी दिस CGPA. It has to be this CGPA. Just give me a thumbs up if it makes sense or not. It has to be this CGPA ना. अब इस CGPA should be for as many rows. जितना रो है सबके लिए होना चाहिए, right? So can I say my x is what? My x is essentially your df.iloc as I've explained. This is your iloc and in iloc में हम सबसे पहले क्या था, हम रो बताते थे किस रो से किस रो तक जाना है. तो हमको ये पूरे रो के लिए जाना है. So I can have something like this. हमारा स्टार्ट हमने डिफाइन नहीं किया, हमारा एंड हमने डिफाइन नहीं किया, बिकॉज वी डोंट नो कितना रो कितना कॉलम है. सो वी यूज दिस कन्वेंशन. बट आई वांट माय फर्स्ट कॉलम, आई वांट माय फर्स्ट कॉलम, राइट? राइट. सो वी हैव टू गो फ्रॉम जीरोथ. इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 0 है. इस कॉलम का CGPA कॉलम का इंडेक्स कितना है? 0 है. गिव मी अ येस और नो यार, जस्ट गिव मी अ येस और नो. आई हैव एक्सप्लेन ना कि जब हम इंडेक्सिंग शुरू करते हैं तो रो का भी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, कॉलम का भी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, इन माय पांडा सेशन. ओके, so we want to get this CGPA. So to get this CGPA you have to start with 0th column and you have to end in 1 minus 0, sorry 1 minus 1, sorry. हम जितना अपर बाउंड देते हैं उससे एक पहले रो पे हम स्टॉप हो जाते हैं. तो ठीक है, दिस वाज योर x पैरामीटर. लेट अस सी व्हाट योर y पैरामीटर इज. योर y पैरामीटर इज दिस पैकेज. ठीक है, माय y पैरामीटर इज df.iloc. I wanna iterate for all rows and I wanna iterate for last column. Forward, if you are taking left to right, this is your 0 and this is your first column, the column with index 1. If you are taking from right to left, this is your -1. As simple as that. जैसे arrays में होता है forward indexing, reverse indexing. So this is essentially your x and y parameter. So let us see what your x is. Let us see what this x is. So when it runs, you see we have different values for x. If I say my y, I have my different values for y. ठीक है, perfect. My इतना हमारा aim हो गया कि we have actually did what? We have actually seen कि we have loaded our database data set. We have separated our parameters जो हमारा x और y बनेगा. Now let's see how do we use our sklearn library to do some things which I'll tell you here. See how do we do it. Okay, अब just tell me here, कहाँ गया मेरा? Okay, just tell me here. मैंने जब तुमको लीनियर रिग्रेशन मशीन लर्निंग करना बताया था, आई वांट कि माय डेटा शुड बी स्प्लिटेड. My data should be splitted. It should be splitted into training data set and test data set, right? Just a second. Vanshika, just tell me my extension is this placement.csv. ये तुम लोग का XLS कैसे आ जा रहा है?
जस्ट चेक, मेरा यहाँ पे .csv है, मैंने वही फाइल तुमको भेजी है, जस्ट चेक कैसे हो रही है. एनीवेज लेट मी, ठीक है. व्हाट आई वाज सेइंग कि आई वांट माय डेटा सेट टू बी स्प्लिटेड. मैं डेटाबेस चाहता हूँ ट्रेनिंग डेटा सेट में स्प्लिट हो जाए और टेस्ट डेटा सेट में स्प्लिट हो जाए. तो आई कैन जस्ट गो ऑन यूजिंग लाइक sklearn library to split the data set. If you go this, you will get this first thing. Click on that and see you have this test train test split in your sklearn. You'll get this. How do we use it? See, we have to use this thing, sklearn.model selection train test split, in which what we'll pass some array, test size, train size, random state, shuffle. You can read कि क्या होता है. जैसे array is what, whatever input you want. Test size is what, कि कितना proportion तुम चाहते हो जो टेस्ट में हो और ट्रेनिंग में हो. Random state is shuffling. It just explain how your shuffling should be. Shuffle, if you want to shuffle your data set before training it, you can read it out. Let's see how we do it. Okay, so here we see we have to use this thing. So I'll simply copy it. I'll tell you कि हम लोग कैसे करते हैं एकदम step by step. So I have to import this thing from sklearn.model selection. Import test train split. ठीक है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप. आया हुआ सबका? यूज दिस थिंग. एकदम डॉक्यूमेंटेशन से मैं करना सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. Okay, so the next thing what we have to do, see, we have actually separated our variables in training variable and test variable. X as training, X as test, Y as training, Y as test, right? यही किया हमने. यहाँ पे देखो एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है. अरे एक्स और वाई कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ट्रेनिंग के लिए, एक्स और वाई कुछ होने चाहिए उधर के लिए टेस्ट डेटा के लिए. ठीक है, आई विल यूज समथिंग लाइक दिस. अब you can see I have this. I haven't used this capital X. I've used the small x. You can have something a random state 42. Let's take it to 2 only. And test size, test size 0.33. You can do it for 0.33. Let us say I want to do for 0.2. I don't know. And let's run this thing. You can work on different values. इससे बस हुआ कि वो randomness change हो जाएगा तुम्हारा, nothing else. So let us see हमारा x train क्या आया है. X underscore share that code. Okay, I have shared you that documentation itself, but still chal. See, send. Perfect. If I want to check this value x underscore train, let us see what values do we have. अब सी इसने कुछ रैंडम वैल्यूज को सेलेक्ट किया और इसने, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट साइज 0.2 दिया था, तो माई ट्रेनिंग साइज शुड बी 0.8. तो 200 में से 0.8 पर पॉइंट कितना हो गया, 160 आ गया. इफ आई वांट टू सी एक्स डॉट ट्रेन, ठीक है, ये तुम अपने से करो, ये मैं अब इस पे नहीं आ रहा हूँ, ऑलरेडी लेट हो गया ऑलरेडी. ठीक है, सो हमने ये किया. अब आई वांट टू एक्चुअली गो ऑन एंड इम्प्लीमेंट लीनियर रिग्रेशन. तो अब यहाँ पे तो इतना ज्यादा यहाँ पे ये है मॉडल्स. अब मैं कैसे सेलेक्ट करूं? यू कैन आस्क कंट्रोल F, linear, click on this thing, you'll get this linear model. अब in this linear model, what do you want to implement? I want to implement linear regression, right? I want to implement this thing. Just tell me yes or no. Do I want this linear regression, right? I click on this. Let me share you with this module also. I'm just explaining कि हम लोग कैसे कैसे देखते हैं, अगर वो क्या जरूरत पड़ा तो हम कैसे देखें. Okay, so it says कि the syntax is something like this: sklearn dot linear model dot linear regression, in which we'll put some
some parameters like fit, intercept, copy, n jobs, positive, something like that. And we have these different coefficients, rank, singular, intercept, feature name it. Okay. So let us see. Do we have example? Yes, we have an example. Okay. So इस example में you see we have used this syntax from sklearn.linear import linear regression. Okay, I'll copy this. I'll go on to my this and I'll import it. Now my linear regression library is imported because इस model में you have seen there are a whole different like logistic regression, perceptron, logistic regression, CV, ridge regression, बहुत सारे ऐसे. But I don't want that. I only want a particular feature that is linear regression. हम बस यही चाहते हैं. तो we have imported it. ठीक है? So अब if I have to train my thing, I have to use this function. You see there is this function linear regression. There is this function, right? There's this function linear regression. I have to use this thing. Okay, let's go on to our interface. Let us say I have this variable LR in which what I want to perform, I want to perform linear regression. I want to perform this. Let's run this. So when you actually load on this, you will have see different parameters like fit, intercept, copy, and see def init is your. Can anyone tell me what this def init is? This is something I have not dealt. अभी मैं Python में नहीं पढ़ा हूँ. We'll see. These are known as closures. We'll see on that. But ठीक है, मैंने linear regression import कर दिया. That is what it is saying here. Okay. What you have to do, you have some values. Okay, I don't want values. I don't want X and Y. I want my, I'm facing letter, so I will watch the rest of the video. Okay, कोई बात नहीं सशा, कोई बात. Okay. मैं फिट भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, मैं फिट अभी आगे देखेंगे. हम आगे देखेंगे अभी फिट करना. उसको मैं अलग से कराना चाहता हूँ. So we have used our linear regression. Now let us say I want to fit my, I got some line and now in that line I want to fit my training value. So how do I do it? lr.fit, lr.fit, and what do I want to fit? I want to fit some training values. So what are my training values? X train, comma, y underscore train. This is what I have given the names. Let me run this. Error. Okay, so now it says कि now my linear regression is ready. My linear regression is ready. ठीक है? Should we proceed आगे? Should we proceed? आया सबका ये इतना तक? Or should I wait? Just tell me. आया सबका या I should wait थोड़ा सा? आगे से. चलो. Perfect. अब ओके, लेट्स सी अब हम आगे क्या करेंगे. ओके. ठीक है, इसने स्कोर निकाला. अभी हम स्कोर पे बात नहीं करेंगे. कोएफिशिएंट अभी हम आगे देखेंगे. We'll see here. Okay, what are the different parameters? Let's see. Okay, we have this predict, because what I have to do, I have to use predict. I have to predict using the linear model. So I'll use this thing. अब देखो इसमें parameters क्या है? Just see. In this we have a parameter array like or sparse matrix. I can pass something like in array or sparse matrix. What? अब sparse matrix का dimension क्या होता है? At least 1 by 1 का एक matrix होगा. At least 1 by 1 का एक matrix होगा. 1 column and 1 row. Just tell me yes or no. Just tell me yes or no. At least 1 column या 1 row का होगा ना? Okay, let me explain कि मैं करना क्या चाहता हूँ ताकि तुमको थोड़ा सा अच्छे से पता लगे. What do I mean by that? What I want is, let's do this lr.predict. अब what do I want to predict? ठीक है, कुछ टेस्ट वैल्यूज को let us see. Let us for some test values. अच्छा रुको, मेरे को यहाँ पे कुछ टेस्ट वैल्यूज दिखाने थे. x underscore test comma y underscore test. ऐसे है कुछ. सी कुछ हमारे पास x वैल्यूज है, कुछ y वैल्यूज इसके corresponding.
ठीक है, ठीक है, ओके. सो आई वांट टू प्रिडिक्ट ऑन सम सीजीपीए जिसके करस्पॉन्डिंग हमको उसका पैकेज मिले. ठीक है, लेट अस डू दिस. आई वांट टू प्रिडिक्ट ऑन x बिकॉज हम x वैल्यू ही पुट करेंगे. एंड लेट अस से कि आई वांट टू गेट माय फर्स्ट वैल्यू. Let us do for x only. ठीक है, these are your different CGPAs. ये तो इंडेक्स है, ये जो इधर 100, 12, 29 ये आ रहा है, these are your index. अब क्योंकि हमने रैंडम यूज किया था वो शफल कर दिया. अब जना these are the different indexes, right? Let us see for the first row what do we get. ठीक है, let us see what do we get. So in order to get your first row, what we'll do, we'll use ilog function for the first row. ठीक है, अब जरा just tell me if I want to use it for first row, I want कि ये जो वैल्यू है हम वो पता लगाए ना. I want to get this value. If see अगर मैं सिर्फ इतना रन करूंगा तो I will be thrown with some kind of error because देखो पहली चीज तो बोल रहा है कि it is expecting a 2D array. It is expecting a 2D array first thing because it need a sparse matrix. Sparse matrix at least 1 by 1 dimension में होगा. But moreover, if I get this, I'll get a tuple. I don't want that. I want its values. I want its values. If I run it, you will still get thrown with this error. You want an you have this 1D array, but it want a 2D array. So I have used this function which is known as reshape function. बताया था मैंने reshape function to change the dimensions. Just tell me, वंशिका, आदि, नंदिनी, मैंने ये चीज बताया था सबको. reshape function मैंने बताया था. So what we are doing is we get this value as 3.89. अच्छा, अच्छा, ठीक है. Okay, so if I print x test comma y test, अच्छा x test कर दिया, चलो let's print y test. So corresponding to the first, देखो 8.58 अगर LPA किसी का है तो उसका LPA कितना आना चाहिए? 4.10, right? Right? Just tell me yes or no. Just tell me yes or no. Right? But if you go down, देखो कितना आया? 3.89 something. तो कहीं ना कहीं we are somewhere around in predicting our value. ठीक है, कुछ error है. I said there would be some error. But you see, for this 112th index, your CGPA is this much. Your CGPA is this much, and you getting this value 3.89111601. This is your predicted value. आया सबका? अगर आया तो give me a thumbs up. You can work for different, let's say 2 per second. The second index is what? 7.15. So if this is your x value, the y value should be 3.49. इतना LPA पैकेज आना चाहिए था, बट आया कितना? 2.384 समथिंग लाइक दैट. तुम्हारा हो सकता है कुछ अलग आए, कोई ऐसा वो नहीं है, हो सकता है तुम्हारा अलग आए. बट यू सी, इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ जस्ट माय स्क्रीन, तो हाँ कुछ भैया एरर है, एग्जैक्ट उतना नहीं आया है, देयर इज सम एरर. ठीक है, लेट अस डू और लेट अस प्लॉट दिस एंड लेट अस सी कि हो क्या रहा है. आया सबका? जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर आया, ये वैल्यू आई सबकी. ये हमने क्या किया, हमने प्रेडिक्ट वैल्यू से पहला वैल्यू यहां से उठाया, कहाँ गया? कोई भी वैल्यू तुम अपने से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते. हम ये हमारा टेस्ट डेटा सेट है, हमारा ये टेस्ट डेटा सेट है, हम यहाँ से स्कोर पता लगाना चाहते हैं. तो ठीक है, हम इसके लिए भी जा सकते हैं, इसके लिए भी जा सकते हैं. मैंने बस एग्जांपल दिया. तो नाउ लेट अस प्लॉट दिस थिंग. इफ यू वांट टू प्लॉट, आई विल हैव समथिंग एज, ठीक है, मैंने ऊपर कहीं पे प्लॉट किया था. ठीक है, आई वांट दिस थिंग.
I want this whole thing only, यही इसी पे हम प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है. बट ओह, जस्ट अ मिस्टेक. Okay, so this was your scatter plot, but now I want the line जिसके थ्रू ये पास हो रहा है, right? I want that line. So how do I get that line? I'll say plt dot plot. So if I do this, I'll get the line. What you have to do, मैंने मेरा यहाँ पे अगर if you get, just tell me कि what is the x variable. The x variable is this x test. X variable is what? Your x test. Just tell me yes or no. Just tell me yes or no. हम इसी वेरिएबल को हम x में प्लॉट करेंगे ना, x एक्सिस पे. what do we predict in y axis? I want to predict this thing. My y value is your lr dot predict for x train. प्रेडिक्ट करो, इसका x train वैल्यू निकालो. अब let us make it in some, वो तो ब्लू कलर में था, इसको let us say it should be color is equals to red, something like that. If I plot this thing, x and y should have some dimensions. What does it say? Okay. Second. Oh, train क्यों? My mistake. Okay. Now you see there is this line. ये line red line दिख रहा है सबको? टेस्ट होगा. हाँ, वही मेरा मिस्टेक था, सॉरी. You see एक line दिख रहा है? Red line. If it is visible, give me a thumbs up. ये line दिख रहा है? So this line is your best fit line. This line is your best fit line. Because अगर हम सबसे error find करें और उसका average लें, तो this average is the minimum. You see, a line passes like this. Okay, इस वैल्यू से इतना एरर है, इस वैल्यू से इतना एरर है. इस पूरे डेटा सेट के लिए अगर एवरेज लेंगे तो दिस एरर इज द मिनिमम एरर. ठीक है. तो दिस इज वन वे ऑफ प्रेडिक्टिंग थिंग. लेट अस से एक और तरीका, यू कैन यूज दिस फंक्शन. दूसरा तरीका ये है कि इफ यू गो हियर, देयर ओके देयर इज समथिंग नोन एज स्कोर. ठीक है, हम स्कोर पे आएंगे, कोई बात नहीं. आर स्क्वायर लो. ठीक है, एक पैरामीटर था. I want this coefficient. If I want to get the coefficient क्या है? ठीक है, let me copy this thing. So let us say coefficient was my what? M, right? So lr dot coefficient, let us print this m. So my coefficient is 0.555. ये जो value आई, this is your coefficient. tan theta बराबर इतना. I can do it for your intercept. There has to be something for intercept. Yes, there is something for intercept. I can copy it out. कहाँ हमको apply करना? Let us say my intercept is C. तो lr dot intercept. क्यों मैं सीधे copy करूँगा? Let me print this C. So your intercept is this minus something. ये जो value आई. So if you have m, if you have C, can you predict using that linear equation y is equals to mx plus C? Can I do it? Yes, I can do it. Coefficient क्या है? आर्या, y is equals to mx plus C. तो coefficient of x is m, that is your slope. आर्या, basic maths. x का coefficient, अरे obviously coefficient has to be of x यहाँ पे. ठीक है, यहाँ चलो. Now you have m, now you have C. So can I write my output to be m times my whatever CGPA? My CGPA is essentially your x plus C. Can I write this thing? Let me comment it. अभी हम उसका काम नहीं है. Can I write? यही कर सकते हैं. y is equals to mx plus, थोड़ा ऊपर
थोड़ा ऊपर ऊपर से। अरे आदि, तुमने m निकाल दिया, तुमने c निकाल दिया, तो इफ आई विल प्लॉट इन दिस, बिकॉज ये क्या है, इसी इक्वेशन का m और x m और c है ना, ये जो लाइन आया इसी का है ये। अभी भी नहीं समझ में आया? अगर नहीं आया तो जस्ट टेल मी, यस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आई एक्सप्लेन, बस जस्ट टेल मी कि आया है नहीं। अगर तुमको इक्वेशन का इफ देयर इज सम इक्वेशन y is equals to 2x plus 3, अगर तुमको 2 और 3 पता है, तो if you can frame that equation 2x plus 3, so if you get x, तुम उसमें पुट करके वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, लेट्स डू इट। लेट अस से व्हाट आई वांट m times, let us take some cgpa here only। हमारा cgpa क्या था, let us take it for cgpa plus your c। so you have this value 3.891। तो जो मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट फंक्शन यूज किया था, वो काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, थोड़ा टेढ़ा। इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स बताया कि उस फंक्शन का अंडरलाइंग मैथमेटिक्स क्या है। हाँ, तुम सिंपल यहाँ गए, वो सिंपल वो कैलकुलेट करके वो तुमको सीधा आंसर दिखा दे, बट एसेंशियली देखो हुआ क्या, यू गेट दिस कोएफिशिएंट, यू गेट दिस इंटरसेप्ट, यू मेक दैट इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू, प्रेडिक्टेड वैल्यू। आया सबका? आया सबका? आर्य, आदि, वंशिका, नंदिनी? नंदिनी, आर्य, वंशिका, सिर्फ एक हाथ उठा। So this was all about linear regression. We'll stop it यहाँ पे। अब what you can do, अब ये डेटा मैं कहीं से भी ला सकता हूँ। If I go it here, let's say, do we have some data sets? Yes, sklearn में कुछ data sets होते हैं। Let me tell, data sets, data sets, data sets। Okay, do we have some kind of data sets here? You can see यहाँ पे तुमको सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात। Let me write sklearn data sets। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा सेट है। You can actually go out and work with this, like there is some house, California housing बहुत बहुत ज्यादा ही पॉपुलर डेटा सेट है। Like from sklearn import fetch, you can use this and you can also predict your values using this। ये हम शायद कल देखेंगे जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज डील करेंगे, बट आई गेस आज के लिए आई एक्सपेक्ट कि इट वाज क्लियर, राइट, जितना मैंने आज बताया। कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो ठीक है, यू कैन गो आउट एंड एक्चुअली डू इट अगेन, go through the lectures। ठीक है, you can work here अलग अलग like data sets के लिए, you can get this data set, you can also go to Kaggle, you can download that data set, because see essentially यहाँ हो क्या रहा है, जो data set तुम दिए हो इस पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी data set तुम कहीं से भी ला सकते हो, you can do it in Excel, you can form some data set for 200 300 1000 10,000 1 million people। that is यहाँ का पार्ट। अब इसके आगे हम बस जो नॉर्मल हम तरीका मैंने बताया कि हम एक तो मैंने लाइब्रेरी से बता दिया, दूसरा है कि हमने उस लाइब्रेरी का यूज करके कोएफिशिएंट निकाला, इंटरसेप्ट निकाला, हमने उसको इस इक्वेशन में रखा है ना, गेट माय वैल्यू, एज सिंपल एज दैट। कुछ इसमें रॉकेट साइंस, जो मैथमेटिक्स मैंने तुमको बताया वही मैथमेटिक्स में यहाँ यूज किया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन आज के सेशन में? I'll send this note, should I send this notebook? uh, ओके कल शायद मैं नहीं ले पाऊँ कोई क्लास, मैं थोड़ा सा आँख में इन्फेक्शन है, ठीक है, बट आई एक्सपेक्ट कि आज का सेशन वॉज क्लियर। ठीक है, अगर कल पॉसिबल होगा तो कल आई टेक, बिकॉज इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तुमको बस देखो ये क्या था, ये जो मैं तुमको लास्ट सेशन में बताया सब कुछ वही था, राइट। ये क्या था, ये जो लास्ट सेशन में मैं तुम लोग को बताया था कि हाउ डू वी एक्सट्रैक्ट वैल्यूज,
आउट ऑफ अ डेटा सेट यूजिंग आईलॉग फंक्शन, फिर इसको रीशेप कैसे करते हैं यूजिंग नमपाई, राइट। अब थोड़ा तुमको समझ में आ रहा हो कि वो सेशन मैंने क्यों रखा, क्यों 2 हफ्ता मैंने पर्टिकुलरली उस पर डेडिकेट किया, टू लर्न पाइथन, टू लर्न दिस। ये जो मैंने पूरा यहाँ लिखा है, आई कैन राइट इट सम फंक्शन लाइक def get me value, and in this value I'll put some x, return m times x plus c, ठीक है। I have this function, अब I can write get, इस फंक्शन का नेम क्या है यार, get me value, control c, get me value for what, for let us take some values, 7.15, indent, oh, so this is more or less how do we use अलग अलग concept, but I expect कि आज जितना मैंने कराया it was clear, ठीक है। तो should we wind up today's session, already बहुत ज़्यादा लेट हो गया आज, but it was important कि mathematics deal करना, ठीक है यार, perfect। कोई query हो तो you can ask me right now straight away, if you don't have any query let's wind up आज का session, थोड़ा आराम मेरे को भी मिला आँख पे थोड़ा सा, अभी तो नहीं आदि, बट अगर आए भी कोई भी क्वेरी आए यू आर फ्री टू आस्क मी, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट, बट आई एक्सपेक्ट कि तुम मेरे से डो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट मी आई शुड स्पून फीड यू। मैं कुछ स्पून फीडिंग में नहीं देना चाहता, मैं इसलिए डॉक्यूमेंटेशन खोला, मैं दिखा रहा हूँ कि क्या कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ क्या हमको ढूंढना है। मैं रट के कोड नहीं आ रहा हूँ या कहीं कोड नहीं खोल के रखा हूँ मैं खुद डॉक्यूमेंटेशन में गया, खुद देखा कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एंड आई वांट यू गो आउट टू द डॉक्यूमेंटेशन, सर्च वॉट एवर यू वांट, you can want some score, you can go out, you can get these scores. Let me help you. Just a second. Just tell me if it is visible or not. Just tell me if it is visible or not. So you can go here, entire screen, I can go here, I can search score, control F, core, so you see I have this thing, I can get my score, I can modify it for my x and y here, let us say, इसके बाद में मेरे को let's RG is what, my LR, and my x and y are what, my x train and y train value. Let us say कि अगर हम x train और y train के लिए करें, x train comma y underscore train, this is what x train, what do I get, this is my r square value आया। if I want to do it for my test value, तो देखो थोड़ा सा जब हम दोबारा हम डेटा सेट को रन किए हमारे पास कुछ हमारा एक्यूरेसी बढ़ा, अभी देखो ये 77% के आसपास है, ये 78%, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, राइट। So this is how you use your documentation. You can have like fit और क्या क्या है यहाँ पे, you can figure out features, तुम features देख सकते हो, what are different fit intercept you can find out, ये अभी ये पूरा देखो तुम, this is not something I could explain, जो तुम्हारा requirement है you get it here, like self fit request, get your weights, set score request, that is something जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम you can just you're just one control F away, control F, you whatever you want you'll get it here. Should I wind up, आज का सेशन बहुत लेंदी हो गया यार आज का, should I wind up, कोई क्वेरी, was it clear जितना मैंने बताया, परफेक्ट। नंदिनी तुम थोड़ा लेट आई, राइट, वंशिका तुम भी थोड़ा लेट आई,